नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। यमत्र नित्य आदौ प्रमुखवार्ताः। स्वातन्त्र्यप्राप्तिकालात् पाकिस्तानस्य उद्घूर्णतावादं प्रचलतीति भारतीय प्रधानमन्त्री। पहलगाम तु अन्तिम आतङ्कतावृत्तिः आसीत्। प्रकोपयति चेत् प्रतिकरिष्यतीति नरेन्द्रमोदी स्पष्टयत्। प्रतिसन्धिषु अतिजीवनाय क्लिश्नन्ति पाकिस्तान। शान्तिचर्चायै सिद्धो भवितुं भारतं सम्प्रार्थयति। चर्चाद्वारा समस्या परिहरणीयमिति शहबाज शरीफ। भारतीय रूप्यकाणि अन्ताराष्ट्र नाणकपदवीं प्रति। विदेशेषु रूप्यकाणि ऋणदानाय भारतीय राष्ट्रकोषः। आद्यघट्टं सीमां विभजन राष्ट्रेषु केन्द्रानुमतिं सम्प्रार्थ्य RBI। भारतीय रूप्यकेषु विदेश विनिमयाय प्रयत्नं प्रारभत भारतीय राष्ट्रकोषः। वंगदेशं, नेपाल, श्रीलंका, भूटान इत्यादि राष्ट्रेषु वर्तमानेभ्यः भारतीयेभ्यः प्रवासिभ्यः भारतीय नाणके ऋणदानाय प्रयत्नं प्रारब्धम्। विदेशराष्ट्राणां केन्द्रीयकोषैः संविदाकरणाय धनमन्त्रालयस्य अनुमतिप्रार्थना अर्पयत्। भारतीय रूप्यकस्य अन्ताराष्ट्र विनिमय मूल्यं वर्धयन् प्रयत्नस्य आद्यघट्टं भवति अयं प्रक्रमः। विदेशराष्ट्रेषु भारतं केन्द्रीकृत्य प्रवर्तयन् वित्तकोशानां शाखाभ्यः भारतीय रूप्यकाणि ऋणदानाय सुविधां प्रकल्पयति। विदेशराष्ट्रेषु वर्तमानेभ्यः भारतीयेभ्यः प्रवासिभ्यः भारतीय रूप्यकाणि ऋणरूपेण प्राप्नुवन्ति। अधुना शाखा प्रवर्तमानराष्ट्राणां नाणकानि उपयुज्य ऋणदानाय अनुमति वर्तते। वंगदेशं, श्रीलंका, नेपाल, भूटान राष्ट्रेषु आद्यघट्टे रूप्यकाणि ऋणदानाय प्रारम्भयति। पूर्वसिद्धता निमित्तम् अनुमतिं सम्प्रार्थ्य राष्ट्रकोशं केन्द्रधनमन्त्रालयाय अभ्यर्थनाम् अर्पयत्। रूप्यकाणां विनिमयमूल्ये वर्धनायै वृत्तिरियं युक्तं भवति। रूप्यकाणां विनिमयमूल्यवर्धनेन डॉलर, यूरो इत्यादि नाणकसमानं भारतीय नाणकं च वाणिज्यकरेन्सि परिवर्तनाय भवति प्रयत्नः। राष्ट्रान्तरीयदलं जनम्। भारतस्य साമ്പത്തിക लाभावाप्तिं प्रकीर्तयत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी। 14-द्विसहस्रतमे वर्षे आविश्वस्तरे 11 आर्थिकव्यवस्था आसीत् भारतम्। अधुना जपानमतिरिच्य भारतं लोकोत्तरं 4थं सम्पद्व्यवस्था जाता। 4 लक्षं कोटि मूल्ययुक्तं सम्पद्व्यवस्था जाता भारतमिति गान्धिनगरे प्रधानमन्त्री प्रास्तौत। दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। भारतं स्वातन्त्र्यम् अवाप्तकालात् पाकिस्तान आतङ्कतां प्रोत्साहयति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी। सरदार पटेलस्य वाणीं विगणयत् इत्यतः वयम् उद्घूर्णतावादम् अभिमुखीकुर्वन्तीति मोदी अवोचत्। पहलगाम अन्तिम मातृका जाता। भारतीय सायुधसेना शक्तिः लोकं दर्शयति प्रधानमन्त्री गुजरात राज्ये गान्धिनगरे प्रास्तौत। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। भारतस्य प्रहरे श्रान्तो जातः पाकिस्तान। चर्चाभ्यः समस्या परिहाराय सिद्धः भवति। भारतं शान्तिचर्चां कुर्यादिति पाकिस्तान प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ अवदत्। उद्घूर्णतावाद समाप्तिं विना पाकिस्तानेन चर्चा नास्तीति भारतं व्यक्तयत्। ऑपरेशन सिन्दूर द्वारा उद्घूर्णतायै प्रत्युत्तरं प्रदानेन सह एव सिन्धु नदीजल संविदाकरणं संहरत् भारतम्। वाणिज्यमेखलायां नयतन्त्रतले च भारतस्य प्रहरेण श्रान्तो जातः पाकिस्तान। अस्मिन् साहचर्ये चर्चया समस्या परिहाराय सिद्धो भवति इति पाकिस्तान प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ निबोधयत्। जम्मू कश्मीर उद्घूर्णताक्रमाः, जलं, वाणिज्यम् इत्यादि समस्यासु चर्चायै सिद्धो वर्तते।
ഭാരതം ശാന്തി ചർച്ചാം കരോതു ഇതി ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് ആവശ്യമുന്നയിത്. ഇറാൻ പ്രശാസനാധികാരിഭിः മേളനാത് പരം ടെഹ്റാനെ ആസീത് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിണः പ്രതികരണം. ഉദ്ഗൂർണതാവാദായ പ്രതിമിത് പ്രധാന സമാപ്തി പര്യന്തം പാകിസ്ഥാനേന ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം വാ ചർച്ചാ വാ അസാധ്യമിതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ പ്രഭൃതയः വ്യക്തീകുർവൻ. പൂർവം പാകിസ്ഥാനായ പ്രദത്ത आवलिमनुसृत्य आतंकवादीनाम् अर्पणं जम्मू काश्मीरे अधिनिवेशं कृत भूमि प्रत्यर्पणं च पाकिस्तानेन चर्चयिष्यतीति भारतं व्यक्तयेत्. वार्तादलं जनम्. भारतीय विरुद्धता भवति पाकिस्तानस्य देशीयता इति माध्यमप्रवर्तकः तथा लेखकः एस् गुरुमूर्ति. मुस्लिं लीग् प्रचारणं कृता हिन्दू विरुद्धतया अभिवृद्धिं प्राप्नोत्. स्वीय सैन्यं नियन्त्रणाय अशक्तः पाकिस्तान कथम् उद्गूर्णतां निवारणं करोति इति एस् गुरुमूर्ति अपृच्छत्. जनं दृश्यवाहिन्याः दि बिग् इण्टर्व्यू कार्यक्रमे मुख्यसम्पादकेन प्रदीप पिळ्ळेन संवदति स्म एस् गुरुमूर्ति. The ruling administration, civil administration says yes, ceasefire. Even the army to an extent says ceasefire, but in the night we see them. That's why I'm saying Pakistan is an anarchic country. It doesn't function under the orders of anybody. So you cannot trust Pakistan when it says we will not have war with you. That is, it cannot control even its army. How can they control the terrorists? So Pakistan is always in a permanent state of war with India, psychologically, intentionally, and it will always hit India. On that there is no doubt. We should be prepared for it. Pakistan's hatred for India is rooted in Muslim League's hatred for Hindus. Pakistan's nationalism is anti-India, as Christopher Jefferlesh said. So now you can't deal with this Pakistan and have peace. A very different Pakistan is needed for Pakistan to have peace and for us to have peace with that Pakistan. I think Pakistan has created a huge thinking in the Indian establishment about Baluchis and Pashtuns. Yes. वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्पद्यते. अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं पादोन 5:00 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां. शुभं भूयात्.